Hello, you're watching Hornbill TV's Primetime. After a period of relative calm, fresh firing and shelling at Torbung Mamang Lekai in Bishnapur district on Tuesday night threatened to reignite fears of renewed violence in the state. Shamsundar Oinam, identified as the last remaining Meitei resident of Torbung Mamang Lekai, said the incident occurred at around 8:45 p.m. while his family was having dinner. According to him, continuous firing lasted for over 20 minutes, during which heavy weapons, including RPGs and 81mm mortars, were used. He claimed that around 7 to 8 mortar rounds were fired, forcing the family to take cover as the attack intensified. Following the incident, a group of local villagers visited Phugakchow Lekai police station and appealed for adequate and sustained security in the region. During the visit, the villagers met Inspector General of Police Rakesh Bawal and Bishnapur District Superintendent of Police Shankar Deba. The residents held a lengthy meeting with the senior police officials, during which they narrated their trauma, security concerns and continued discomfort in returning to normal life. आपका नाम बताइए। तोरबुंग का वो नाम अपर्णा 1 नंबर 4। और ये घटना जो है कल शाम को कितने बजे हुआ और किस तरह से हुआ ये सर ये हुआ जो 8:30 बजे हुआ था। तो हम लोग इधर में खाना खा रहे थे। उसके बाद में हम लोग बच्चे फैमिली सब लोग हमारे साथ खाना खा रहे थे। उसके बाद में फायरिंग चल रहा था। तो उसी समय जब फायरिंग चला था तो हम लोग सोचा कि तो 2-3 बार होके उसके बाद में खत्म हो जाएगा बोल के सोचा था। बाद में फिर बॉम्ब फेंका और फायरिंग चल रहा था। इतना सारा हुआ था, पर कुकी लोग तो इतना हल्ला ही मचा रहा था सर। और तकरीबन कितने बजे तक ये गोलीबारी चली? सर ये सर 8:30 बजे, थोड़ा ऊपर तो ऐसे हो सकता है सर। हाँ, और आप लोगों को किस तरह की मतलब भावना हुई, क्या लगा आप लोगों को, कितना डरावना था, वो सब बताइए। सर डरवा तो वो बहुत ज्यादा हुआ था, मतलब कि जो क्योंकि 3 तारीख को जब शुरू हुआ था मैं घर में थी और बच्चे लोग सब इधर में घर के जब पीछे वाला गांव का जब घर जला गया तो सब फोन उधर में जब जल के इधर में आया, सब सामान लेके कुछ सामान बचा था वो बचा लेके आया था। बस उसी समय सब भागते रहे मेरे आंखों के सामने भागा था सर। सरकार लोग ये क्या कर रहे हैं पता नहीं, इतने साल हो रहा है अभी तक ठीक से नहीं देख रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है सर। ये सरकार की द्वारा जो बयान दिया गया है कि कुछ रिलीफ कैंप में रहने वाला आईडीपी लोग जो है रीसेटल किया गया, ये कितना सही है और कितना गलत है? सर ये तो थोड़ा मतलब कि थोड़ा सही भी है, थोड़ा भी गलत भी है। फिर भी ना हम लोग ने जो बोलता है ना सर, ये जो हम लोग जो बोल रहे हैं तो ये जो रिलीफ कैंप में जो रहता है, जो रिलीफ कैंप में जो रह रहा है अभी, जो क्या बोलते हैं हम लोग आर्मी, जो हमारा दीदी लोग भी है उधर, सब फैमिली सब घर का चुचानपुर का भी है, बंगला भी के गोविंदपुर, ये तो जो मनिंग लकाई भी है, सब लोग इधर में रिलीफ कैंप में इतना कष्ट से रहा है। सरकार लोग अभी क्या कर रहा है पता नहीं सर। हर सन मतलब कि हर महीना में पैसा थोड़ा डाल रहा है। ये पैसा से की जिंदगी नहीं बिता नहीं सकता है सर। तो इसी वजह से हम लोग को सरकार, हम लोग जगह जमीन है उसको हम लोग चाहिए बस। सुरक्षा के हिसाब से आप लोग कितने सुरक्षा फील कर रहे हैं अभी, ये बताइए। सर जो हम लोग को जो इधर में है, हमारे गांव में जो है इधर में जो सीआरपी वाला भी है, आर्मी वाला भी हम लोग को बहुत सपोर्ट करता है। फिर भी ना हम लोग सपोर्ट करता है, फिर भी ये घर जो जल गया है इन लोग तो थोड़ा आने के लिए मन करता है। जो घर जल गया बना के तो थोड़ा ठीक ठाक करके थोड़ा आ सके तो बोलते दिन में बहुत रोता है। जो हमारा नानी लोग भी है, दीदी लोग भी है, सब रोता है। फिर भी क्या कर सकता है, सरकार का ऑर्डर नहीं है बोल के बस ऐसे ठहरा है। कोई सरकार से आप लोग कोई अपील वगैरह करना चाहिए, क्या कहना चाहती है आप? सर अपील तो मैंने एक बार मैं सरकार के पास जाके भी किया था और सरकार ने बोला था कि हमारे गांव में बस बोल रहा कि 50 लोग हमारे तोरबुंग गांव में आ रहा है, वो ऐसे बोला था। तो मैं जब सरकार से मिल के आया तो उसके बाद में आके तो देखा ना जब सरकार ने 50 लोग इधर में आया है बोल के ऑर्डर दे दिया बोल के बोला था। तो उसके मैं इधर में आके देखा तो कोई भी नहीं, पूरा सुनसान है। बस हमारी फैमिली और जो हमारे गाँव लोग का थोड़ा लड़का लोग रहता है वो हम लोग के साथ रहता है बस। तो आप लोग का घर जो है वो आखिरी मैतेई फैमिली है वो? हाँ हम लोग आखिरी है, पर बॉर्डर में भी हमारा लास्ट भी है और पीछे का भी सामने का भी हमारा लास्ट है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका क्या नाम है बताइए? श्यामसुंदर ओइनाम नाम है। श्यामसुंदर ओइनाम है। और इस जगह का क्या नाम है? तोरबुंग मामांग लेके। और कल शाम को कितने बजे तकरीबन ये घटना हुआ था? ये 8:45 उसी टाइम से ये लोग
तो आपने ये बताया कि आपका जो घर है ये लास्ट मैते घर है अभी के लिए। तो अभी कल से जिस तरह से गोलीबारी भी हुआ है तो आप भी परेशान होगी, आपके घर वाले भी परेशान होगी, तो आप सरकार से क्या कहना चाहती है? हर बार बोला है कि मैंने बोला जो सर पहले जो हो चुका है हो गया, जो अभी जो रह गया अभी तो इसको आशा से आप लोगों ने जो ड्यूटी के लिए प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों ने जितना जो फौजी लोग भेजा है और जहाँ में जो आप लोग सिक्योरिटी रखा है तो इसको सही सलामत लोग को ड्यूटी करने दो, जो रहेगा इसको सेफ्टी ही रहने दो, 2 बार नहीं होने के लिए नहीं देना बोल के बताया था मैंने। तो वो लोगों ने भी बोला भरोसा से, उन्होंने बोला ठीक है हाँ ये करूँगा, ऐसा से हम लोग ड्यूटी करूँगा, लेकिन आप लोग ने भी थोड़ा हम लोग को भी सहायता हम लोग की मदद करो, हम लोग भी करेगा बोल के बताया। लेकिन फिर तो कल जैसे फिर ऐसे वहाँ पे हो गया। तो After a report of repeated violence last night here in Torbung Mamang Likai, some suspected miscreants elements fire upon this Maite village here at Torbung Mamang Likai. The team of police personnel and security personnel are right now inquiring here at Torbung Mamang Likai. The situation remains critical. The family members said even RPGs have been fallen here, right in front of the homes. This is Torbung Mamang Likai, and from here onward, Kuki settlement are here, and from there onward, Meitei settlement are here. So the situation remains critical right now here at Torbung Mamalikai. This is Mubasir Razi reporting for Hornbill TV. Over the incident, Kokomi convener Kurai Jamathova on Tuesday strongly condemned the armed firing and bombing incident at Torbung in Bishnapur district, terming it a grave violation of constitutional rights and a serious threat to civilian safety. Athauba said such acts directly violate the right to life and personal liberty guaranteed under Article 21 of the Constitution and undermining constitutional governance, public order and social harmony. Now, to the disappointment of the government effort to resettle IDPs in the area, last night some unfortunate incident happened where a number of bullets have been fired upon. What is the assessment at the moment? Yesterday we were here in the morning visiting the houses where the recent process of resettlement took place, and we have even met with many of the local villagers who are very happy because they have been given an opportunity to return back to their respective homes, to their birthplaces after 2 years 7 months of time, 30 months of time. And this is a very important day for the villagers. However, to our utter surprise, it was very unfortunate that certain suspected Kuki groups holding automatic rifles and even bombing the resident area where the new resettlements were happening. Such kind of action should not be tolerated by the state administration and the state government at any cost. We have been informed that this attack has been carried out from Kangbai area where there is a church complex, and that area is also quite in a proximity to security barrack areas. So we want the state police enforcement agency to take stringent action to track down all those terror groups who are terrorizing the innocent civilians who wants to return back to their respective homes. And above that, today we have met with the Superintendent of Police of Bishnapur districts, and in that meeting we have briefed on all the situations over here. And above that, we have also submitted a complaint against Kuki Joe Council, who have today early morning issued a statement justifying that terror act which is against the idea of restoring peace and normalcy in the state of Manipur. And such statement issued by the Kuki Joe Council should not be accepted, and they should be banned. This organization should be banned because they have openly justified such kind of terror attack, and this cannot be tolerated by the state administration. And we want the state administration to take stringent action against the responsible person who issued the statement, namely Mr. Ginja Valjong, who used to be the spokesperson of ITLF earlier, and he is responsible for issuing this statement, and the organization itself has to be banned by the state government. Otherwise, if the government fails to take legal action against the organization as well as the responsible person who is issuing the statement, we will consider that the state government has endorsed and indirectly supported those terror groups as well as those organizations who are justifying and supporting the terror act, and it cannot be tolerated. However, we also want to appeal to the villagers of Torbung and Pawalchau Ikai that our process of resettlement should continue. Such kind of terror ambush should not
should not demoralize our right to go back to our home, and we will be supporting. Kokomi will extend all necessary supports and security arrangements. We will be meeting with the DGP after we return from here. We will also be meeting with the security advisor to to increase the deployment of security forces, as well as we want the area, the suspected area from where the attack has carried out should be sanitized, and necessary suspected terror groups should be neutralized at the earliest. This is our demand. Thank you. Meanwhile, the incident has drawn strong condemnation from the National People's Party, which denounced the firing and appealed for restraint, urging the people of Manipur to give peace a chance. NPP National Vice President I. Hemochandra, Manipur NPP President Dr. Loro S. Foze, and NPP leader of the Legislative Party and MLA M. Ramesh were termed the firing unfortunate and disturbing. The party urged all sections of society to refrain from violence and allow ongoing efforts aimed at restoring peace and normalcy in the state to continue without disruption. Meanwhile, authorities said the situation in Bishnapur district remains calm but tense, with security forces maintaining a close watch in the affected areas. Okay. Sir, particularly regarding the yesterday incident which was took place near Torbung or Kambai within Bishnapur district, we had heard that there is lots of firing took place yesterday. So as of now, what's your reaction from your party side? See, in the first place, there was a time when we thought that peace was coming. For almost a year or so, there has been a period of lull. There was no violence, and then people were all looking forward to the formation of a government, at the same time to return to their own places. Yes, everyone wants to go back to their own places. We encourage that. But in the meantime, we have experienced a moment of peace, whereas deep inside there was anguish. There was a period when there was fear. In spite of the fact that many people want to go back to their own homes, there was hesitation. And so this is a period when the public or all communities, including all organizations, must be involved in creating a conducive atmosphere. And I think we had expected that this would happen, but certainly unexpectedly, out of the blue, the violence, the whatever gunfire or whatever violence started. And I think it is most condemnable. My party, the National People's Party, had advocated for a period of peace to return back to Manipur. And I think the leadership in the party has always advocated that we as a party must recognize the vision and the aspiration of each community. They must have a place. Unless they are given a place, when somebody wants to dominate over others, it also creates a bad impression, a bad atmosphere. And so I think we must be generous in our heart. Let us accommodate one another, and let us let us give up violence, because violence will only invite another period of violence again. And I think that would be very unfortunate. The state of Manipur is so beautiful, and it had grown, from the period of insignificance to a period when we were able to host even the most desirable, beauty pageant in Manipur. And so we thought that peace was returning, development was coming back. It is very unfortunate that our people, not everyone thinks that peace is necessary. That is unfortunate. We condemn such attitude. Let us once again give peace a chance, that this period when we have the Christmas season coming, the Prince of Peace, he is there and he will bring peace on earth. And the role that you and I should play is to give goodwill toward men. We as different communities, we must have goodwill one towards another, and that alone will bring peace to our land. Thank you. So yesterday's unfortunate incident was occurred the very next day of the high. We'll be right back after a short break, so stay tuned for more news.
सुले आसमां डबल इंजन का ये मिशन महान 2047 तक हम न रुकेंगे 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक यूपी सरकार की गूंजे धमक सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास एक्सप्रेस वे पर साए साए पूरा विश्वास विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास 2047 का ये विजन बहुत खास माफिया का दी एंड फियर गॉन योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग बेखौफ घूमे जनता गुंडों पर मार नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार यूपी ऑन द राइज सुले आसमां डबल इंजन का ये मिशन महान 2047 तक हम न रुकेंगे 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे Welcome back. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari informed the Rajya Sabha on Wednesday that the country is on track to implement a multi-lane free-flow toll system and AI-driven highway management by the end of 2026. This ambitious technological overhaul is designed to permanently eliminate wait times at toll plazas, allowing commuters to travel across the national highway network without the need for physical barriers or slowing down for payment processing. ये जो MLFF है ये बहुत अच्छी व्यवस्था है ये मल्टी लेन फ्री फ्लो पहले हमारे पास टोल पर पैसे देने पड़ते थे तो उसके कारण कभी कभी 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 मिनट लगते थे फिर फास्ट टैग आ गए तो फास्ट टैग आने के बाद ये 60 सेकंड तक आया है और 60 से भी कभी कम होता है और हमारा इनकम 5,000 करोड़ कम से कम बढ़ा है अब फास्ट टैग के जगह पर ये मल्टी लेन फ्री फ्लो आने के कारण 80 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चली जाएगी तो टोल नाके पर कोई रोकेगा नहीं कोई पूछेगा नहीं कोई बताएगा नहीं तो ये इसके कारण वेटिंग पीरियड लगभग 0 करने का हमारा प्रयास है इसमें नंबर प्लेट और रिकॉग्निशन प्लस AI एंड फास्ट टैग ये योजना है और ये इम्प्लीमेंट करने के लिए 2026 एंड तक हम 100% ये काम पूरा करेंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये काम जब पूरा होगा तो कम से कम 1500 करोड़ रुपए का फ्यूल बचेगा और हमारा इनकम कम से कम 6,000 करोड़ और बढ़ने की संभावना है टोल की चोरी खत्म हो जाएगी तकलीफ खत्म हो जाएगी और सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों को रुकना पड़ता था वो भी बंद हो जाएगा और इसके साथ हमारी सरकार ने और अच्छी योजना की है कि टोल देने के बारे में लोगों की बड़ी नाराजगी थी तो अब केवल 3,000 रुपए में 200 टोल फ्री है तो ये पास हमने दिया है जिसके कारण ये जहाँ करीब एवरेज 10 से 15,000 रुपए टोल महीने का लगता था जिनको उनका काम अब 3,000 रुपए में हो गया तो उनका भी करीब 7 से 10,000 तक का सेविंग है और मुझे लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके कारण निश्चित रूप से एक जो राहत लोगों को मिली है उसके कारण काफी बड़े प्रमाण पर जो ट्रैवल टाइम है वो भी कम है In a development in the long-running Bhima Koregaon Elgar Parishad case, the Bombay High Court on Wednesday relaxed bail conditions for activist and accused Gautam Navlakha, permitting him to relocate from Mumbai to his home in Delhi while the trial remains pending. A division bench led by Justices Bharti Dangre and Shyam Chandak granted the relief, modifying an earlier bail condition that had restricted 73-year-old Navlakha to the jurisdiction of the Bombay High Court. The court's order comes amid mounting concerns expressed by Navlakha's counsel about his advanced age, financial hardships and prolonged delay in the commencement of trial proceedings. Senior advocate Yug Chaudhary, representing Navlakha, had argued that his client could no longer afford living in Mumbai and should be allowed to return to his permanent residence in Delhi. Navlakha, a human rights activist who has been on bail since late 2023, is one of 16 individuals charged under the Unlawful Activities Prevention Act in connection with allegations of conspiracy tied to the Elgar Parishad event and subsequent caste violence near Bhima Koregaon in 2018. The trial has yet to formally begin despite years of judicial proceedings. We'll be right back after another break, so stay tuned for more news.
मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ। नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। Welcome back. The Supreme Court on Wednesday made a strong observation during the hearing on air pollution in the Delhi NCR region, suggesting that toll collection at Delhi's borders should be suspended to help curb vehicular pollution. Chief Justice of India Surya Kant said revenue generation through tolls cannot take priority when pollution levels are alarmingly high. The apex court expressed its intent to evolve a concrete plan to ensure that no toll plazas operate at Delhi's borders until January 31 next year. It further suggested that from the coming year onward, toll collection should remain suspended annually between October 1 and January 31, the period when pollution peaks in the national capital. The CJI also directed that a notice be issued in the matter. The senior advocate appearing for the National Highways Authority of India accepted the court notice. The bench also asked NHAI to consider relocating 9 toll collection booths currently operated by the Municipal Corporation of Delhi to locations where NHAI personnel can be deployed. The court suggested that a portion of toll revenue collected by NHAI should be shared with the MCD to compensate for temporary losses arising from removal or shifting of toll booths. Congress leader Udit Raj on Wednesday, while leading a protest by All India Unorganized Workers Congress against the centre's decision to rename the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act to Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Gramin Bill, burnt a copy of the bill. भगवान का नाम यूज करना बंद करो, मजदूरों के हक पे भगवान का नाम यूज करना बंद करो, उनका रोजगार चाहिए, बंद करो, बनेगा नाम वापिस लो, आप इस स्कीम का नाम बनेगा नाम वापिस लो, बनेगा नाम वापिस लो, बनेगा नाम। भगवान राम का नाम किसी अन्याय के लिए या अन्याय के काम के साथ में जोड़ा जा सकता है क्या? अब तो मजदूर का मौलिक अधिकार कानूनी अधिकार नहीं था, होगा। पहले कानूनी अधिकार था कि अगर 15 दिन तक काम नहीं मिलता था तो सरकार को पैसा देना पड़ता था और 100 दिन का रोजगार देना गारंटी थी। और पहले केंद्र सरकार की 90% की राशि दी जाती थी, अब केवल 40% दिया जा रहा है। पहले और अभी भी जो नरेगा में है, जो स्थानीय स्तर। That was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye.